Live market session brought to you by Upstox, and my name is Amit Dubey, and I am a CFP and a SEBI registered intermediary, an RA, and I shall be leading this in front of you. This session is going to be in English, हिंदी और इंग्लिश में करेंगे और आपके जो भी सवाल है आप चैट बॉक्स में प्लीज डालकर क्लैरिफाई कर लीजिएगा। और स्टार्ट इस सेशन में हम लोग कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन या ट्रेडिंग टिप्स नहीं देने वाले। ये एक जनरल मार्केट एनालिसिस होगा जिसमें ब्रॉड इंडेक्स को हम लोग समझेंगे कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा उसको समझ सकते हैं व्हाट इज अ प्राइस एक्शन। एंड उसके बाद एक करीब 1 घंटे का सेशन होगा। आधी घंटा करीब हम लोग ब्रॉड मार्केट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे लेवल्स क्या हैं। ठीक है, अगेन नो ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस और एनीथिंग ऑफ दैट नेचर विल बी शेयर्ड। अगर आपके पास कोई ऐसा आपका रिक्वायरमेंट भी है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक कैसा लग रहा है या कुछ, मैं एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट्स नहीं दे सकता मैंडेट। हाँ, हम लोग चार्ट को एनालाइज देख सकते हैं, चार्ट को जरूर देखना चाहिए एंड उसके ऊपर एक ब्रॉड एनालिसिस कर सकते हैं कि चार्ट स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वीक लग रहा है, टेक्निकली क्या लग रहा है, वो बात। ठीक है, सो मैं एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग में सेट करके चाहता हूँ ताकि कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट ना हो कि यार यहाँ पर हम लोगों ने आधी 1 घंटा बिताया और फिर बाद में भी हमको कोई ट्रेडिंग या टिप्स नहीं मिले। तो setting the ground realities and the expectations clear so that we can start the session. ठीक है, I hope everybody is able to see the screen. मैं अपना प्रेजेंटेशन चालू कर देता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स, कैन यू प्लीज कंफर्म आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस, मैं इसको सेट कर लेता हूँ ठीक से। ऑल राइट, सो व्हाट आर वी डूइंग हियर? हम लोग एक बेसिक मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। वी विल लुक एट द ब्रॉड मार्केट एनालिसिस। थोड़ा हम लोग वर्ल्ड मार्केट भी देख लेते हैं यहाँ पर। इज द वॉइस क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? लेट मी स्पीक अ लिटिल लाउडर। आवाज आ रही है अभी सबको? या ग्रेट। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ब्रॉड मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। लेट अस गो टू द इंटरनेशनल मार्केट्स फर्स्ट। पर एक फ्लेवर, नया नया फ्लेवर ट्राई करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। द S&P 500, ठीक है, ये यूएस का मार्केट है। यूएस का मार्केट, हाउ इज इट लुकिंग? इट इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज नियर इट्स ऑल टाइम हाई एंड देयर इज नो वीकनेस एज सच। You look at any of the major indexes in the US, all right, all three, which is S&P 500, Nasdaq and the Dow Jones Industrial Averages, तीनों काफी strong दिख रहे हैं, all right। And अगर हम लोग gold futures की बात करें, gold is also looking strong, silver is also looking strong, crude is looking weak, and crude being weak is one of the primary reasons कि broad markets are strong and they are functioning well. If you switch off the ACs and everything, अब शायद थोड़ी वॉइस क्लियर होगी आप लोगों की। Yeah, is the voice clear now? Perfect. So what we've seen is the precious metals are up, equity markets are up, crude is down, and crude is a cost. Correct? वर्ल्ड मार्केट में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, कोई इंडस्ट्री चलता है तो crude will be an input, and if one of the major input costs going down, it should work well for the. तो ब्रॉडली स्पीकिंग यूएस मार्केट काफी पॉजिटिव है, प्रेशियस मेटल्स ऊपर है एंड क्रूड जो है नीचे जा रहा है, एंड दिस इज नॉर्मल सिचुएशन कि भाई
मार्केट्स ऊपर है एंड क्रूड नीचे है। लुक एट द एशियन मार्केट्स, मेजर इंडाइसेस की देख रहा हूँ। दिस इज निकाई, मतलब जापानीज मार्केट में आप देख रहे हैं कि इट इज यू नो, आप देखें तो ये करीब 20 साल का डाउनटर्न था, उसको पूरा कवर करके नाउ इट इज एट अ टाइम हाई। स्पीकिंग इवन द इट इज bullish. कोरियन मार्केट इज आल्सो डूइंग नॉट टू बैड, ठीक है, थोड़ा ये वीक है। दिस इज नॉट द कोरियन, दिस इज द हांगकांग मार्केट। The Korean market, which is also at an all-time high, and you look at the Chinese market is तो चाइना मार्केट थोड़ा वीक है, अभी रिसेंटली इसने पिकअप किया है, विच इज वाई काफी आप न्यूज में सुनेंगे कि चाइनीज मार्केट में काफी इन्फ्लो आ रहे हैं। वाई? बिकॉज फ्रॉम अ रिलेटिव वैल्यूज परस्पेक्टिव चाइनीज मार्केट में थोड़ा मंदी था और साइडवेज के बाद एक ब्रेकआउट दिख रहा है। दैट इज वाई प्रोबेबली पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द चाइनीज मार्केट, स्टिमुलस वगैरह भी अनाउंस हुआ है। whereas compared to other markets they are already gone up, तो वहां पर ज्यादा इन्फ्लो शायद नहीं है, मे बी इन द डाउनवर्ड मार्केट्स आएंगे। ये ब्रॉड मार्केट एनालिसिस पर लिया वर्ल्ड, एक स्नैपशॉट देखिए, बहुत ज्यादा डीप में जाना नहीं, बिकॉज़ वी आर नॉट ट्रेडिंग दीस इंस्ट्रूमेंट्स। I'm coming straight back to yeah, it could be an impact, but if you notice that world over, most of the major markets are doing fairly well, right? Now compared to India, now what is happening with Indian markets? Look at the broad market. Yeah. ये निफ्टी का चार्ट है एंड निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है। मैं फ्यूचर्स का देख रहा हूँ बिकॉज मैं आई मीन यू कैन डू स्पॉट एनालिसिस आल्सो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फ्यूचर्स का भी देख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिक टू वन चार्ट ताकि आपको लेवल्स एंड नंबर्स याद रहेंगे, ठीक है। चलिए, ईज और अंडरस्टैंडिंग नॉट कंफ्यूजन, मैं स्पॉट मार्केट का चार्ट देख के आपसे बात करता हूँ, ठीक है, और सारा इसमें से एक बार के लिए ये सब निकाल, ठीक है। अब ब्रॉडली देखें व्हाट इज हैपनिंग हियर, वी क्रिएटेड वी पीक्ड इन लास्ट ईयर सितंबर, मतलब करीब करीब एक साल पर हुआ है। एक साल से अगर किसी ने इंडियन मार्केट में पैसा डाला होगा, last 1 year if anybody had put money in the Indian market, they have not made anything, right? Last September if somebody had invested in the peak, they have not made money. In fact, they have lost money from this peak. Will you agree? They're actually down by 5.5%. Is this clear? Broadly speaking, Indian markets have not performed in the last one calendar year. Okay? Now, there could be multiple reasons. One, we have certain, what is the main reason why the markets go up? Main reasons, the main reason that the market goes up या indices या equity market ऊपर जाता है क्योंकि markets के रिजल्ट अच्छे होते हैं, ठीक है, जो कंपनियां हैं वो अच्छा रिजल्ट दिखाती हैं, अच्छे ऑर्डर बुक्स बताती हैं, सेल्स बताती हैं और प्रॉफिट्स बताती हैं। मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर अच्छा सेल्स हुआ, ग्रोथ हुआ, अच्छा ग्रोथ हुआ, एंड फ्यूचर प्रोजेक्शंस के लिए सबसे सिंपल चीज क्या होता है कि भाई मुझे आगे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मेरा ऑर्डर बुक जो है ना वो भरा हुआ है, ताकि मेरे को आगे भी काम दिख रहा है, आगे 3 महीना 6 महीना विजिबिलिटी होती है फ्यूचर की। इसके बेसिस पे हम लोग मार्केट में एक अनुमान लगाते हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू करते हैं, हाँ ये इस तरह की कंपनी है, इस तरह का ग्रोथ प्रोजेक्शन है, इसके लिए हम इसको, बिकॉज प्रॉफिट बनेगा, डिविडेंड्स मिलेगा, उसी से हमारा पैसा बनेगा। दैट्स द बेसिक थंब रूल ऑफ एनी मार्केट मूवमेंट, राइट। इन द लास्ट 2-3 क्वार्टर्स अगर आप गौर से देखें, ब्रॉडली स्पीकिंग मार्केट्स आर फ्लैट लाइन, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। एक पीक बनाया हम लोग ने, उसके बाद 2-3 क्वार्टर जो है हमारे रिजल्ट जो है मोटा मोटी सिंगल डिजिट, लो सिंगल डिजिट पे चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, बहुत ही फ्लैटलाइन टाइप ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। तो प्राइमरी रीजन मार्केट्स को इसमें करने के लिए, बिकॉज दिस इज बैरोमीटर ऑफ कंपनीज डूइंग बिजनेस, तो बिजनेस मंदा है। अगर आप टैरिफ्स की बात करें, ये एक इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रखा है, ट्रम्प टैरिफ्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, दैट इज एन एडेड प्रॉब्लम, तो ये दो प्रॉब्लम्स हमारे साथ सामने सामने हैं। क्रूड सस्ता है,
अ गुड थिंग, ठीक है। टैरिफ का एक प्रॉब्लम है जो अभी फिलहाल के लिए हमें तलवार के जैसे लटका हुआ है। मेजर रीजन इज कॉर्पोरेट विजिबिलिटी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स विजिबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसके कारण मार्केट को परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। थोड़े बहुत उछाल आ सकते हैं मार्केट में, थोड़ा वैल्यू हो सकता है कि मार्केट बहुत गिर गया इसके लिए तो खरीद लेते हैं, वो सब ठीक है। बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपके रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, या आपने बोला कि 25% से ग्रो करो और आप 15%, तो मार्केट में जो आपकी प्राइस, जो आपके शेयर का भाव है, उसको गिरना ही गिरना। मार्केट एक्सपेक्टेशंस में, ब्रॉडली स्पीकिंग, the results have not been that great, right? तो ब्रॉड मार्केट अगर आप बात करें पिछले एक, थोड़ा क्या है, हम लोग के साथ है क्या प्रॉब्लम, हम लोग इंट्राडे एक मिनट के चार्ट पे, है ना, समथिंग लाइक दिस, 1 मिनट के इंटरवल पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, अरे यार इसमें काम कर लेंगे, इसमें ट्रेड कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं होना है ना। इसमें सिर्फ आपके ब्रोकर्स अमीर होते हैं, दे ओनली मेक मनी बिकॉज ऑफ द प्रिविलेज दैट यू पे ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग में, एंड आपको ब्रॉड मार्केट का व्यू नहीं समझ में। तो एक ब्रॉड मार्केट व्यू लेने के लिए इट इज ऑलवेज बेटर आप थोड़े लार्जर इनके चार्ट्स पे देखें एंड समझे कि भाई हो क्या रहा है भाई। एवरीबॉडी, यस और नो? ऑलराइट, सो नाउ, राइट नाउ, ओके, नाउ एक ब्रॉड मार्केट का अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब हम अब हम देख रहे हैं कि करेंटली प्राइस कहाँ पर है। करेंटली अगर आप प्राइस देखें तो एक जीएसटी का जो अनाउंसमेंट आया था ऑन द 15th ऑफ अगस्त बाय द प्राइम मिनिस्टर, उसके कारण हम लोगों ने यहाँ पर एक उछाल मारी थी, मतलब मंडे 18th ऑफ अगस्त को हम लोगों ने एक अच्छा खासा उछाल मारा था। दैट वुड हैव बीन एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर द मार्केट, क्यों? क्योंकि एक ये डाउन ट्रेंडिंग जो ट्रेंड था उसको तोड़ के यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ। दिस वाज अ क्लासिक ब्रेकआउट beginning. This is the beginning of a classic breakout. Which one? All right. But did this breakout have any legs? Did it continue? This did not continue, right? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्रिएट किया, एक, ऑलराइट। अब क्या होता है जनरली whenever there is a very strong breakout, okay, and if you notice on the breakout day, was it supported by volumes? This is correct. So this breakout was with lower than expected volumes, lower than the average volumes. तो मतलब क्या होता है, एनीबडी जो भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, जो भी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो, क्लासिक साइन ऑफ ब्रेकआउट इज ब्रेकआउट प्लस स्ट्रॉन्ग। ये एक क्लासिक मेथड होता है टू कंफर्म कि हाँ ये ब्रेकआउट जो है ना ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब ब्रेकआउट आया बट रेड कैंडल, क्या हुआ यहाँ पर हो गया फेडिंग हो गया, मतलब क्या हुआ, lot of people did not trust this breakout, and in that initial moment itself they started selling, so people were looking for an opportunity to sell. तो ये एंटायर प्रोसेस जो 5-6 दिन का जो सेशंस हुआ है, इसमें हुआ क्या है, मेजॉरिटी ऑफ दिस इज, will you agree with this? Majority of this entire process, entire price action can be termed as sell on rise, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ऊपर आया उन लोगों में broader market participants have continued to sell the Indian equities. This is clear everybody, right? Now ये तो हो गया, तो हाइंडसाइट में हम लोगों ने पिछले 4-5 दिनों का, पिछले 1 साल का एनालिसिस कर लिया ब्रॉड मार्केट, बट एज एन ट्रेडर, ठीक है, एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर, आपका करंट कैंडल्स पे, पैटर्न्स पे थोड़ा ध्यान होना चाहिए, राइट। नाउ एज पर दिस हम लोग अभी कहाँ पर है,
हम लोग एक गैप एरिया में, यस और नो? एंड डाउन ट्रेंड था, ठीक है, फिर यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट था, देन वी क्रिएटेड अ गैप. नाउ कैन आई से दैट दिस गैप कैन, or let me put it this way, can it act as a support? ठीक है, can it act as a support? So should I preempt these things and then go into a strategy? मेरे को क्या मैं भविष्यवाणी करूं कि यार आगे चल के यहाँ से ऐसे ऊपर जा सकता है? नहीं. What we should do as technical analysts is wait for confirmation. हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं सिनेरियो नंबर 1, गैप एज सपोर्ट. ठीक है, हियर व्हाट वी विल डू, वेट फॉर confirmation. Simple. How will we wait for confirmation? That we want to see a U turn. A U turn in the, करेक्ट, तभी तो इसको बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है. फेयर इनफ. सो दिस इज आवर सिनेरियो नंबर 1. So as technical traders, all we need to do is we should do scenario analysis basis the price action. ठीक है, और इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं रहता. हम लोगों ने एक प्लानिंग किया, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, और आपके पास 3-4 सिनेरियो आते हैं, एंड बेसिस एनी सिनेरियो यू विल हैव अ प्री डिफाइंड, प्री रिकॉग्नाइज्ड, पहले से तय किया हुआ प्लान आपके पास रेडी रहना चाहिए. ठीक है, एक ये सिनेरियो है कि भैया अगर ये गैप टर्न करता है एंड ये जो लेवल है, गैप लेवल है कि ऊपर मार्केट, राइट, के ऊपर मार्केट जाता है, that means that it has filled that gap and is trying to now move up. Is clear? This could be our scenario 1, right? Now what is scenario number 2? We will wait for this information. Suppose this information does not come and the market continues to fall and breaks this gap, this is our next probable level of support. Can I say this is a pivot point? यहाँ पर रिवर्स मारा था ना मार्केट, तो कैन वी से सपोर्टेड पिवट? इज दिस क्लियर कि यहाँ पर शायद सपोर्ट मिले? अगेन इवन हियर we blindly go long? No, we will wait for confirmation. Is the entire analysis making sense? Is it clear for everybody? Yes or no? सबको समझ में आ रहा है? Any questions still here? So we are currently, the trend is not down. We are in a sideways sort of a market because we are trading between two pivots. ये pivot है, right? Which is at on the spot it is 25,153 is a resistance wala pivot and 24,337 is the support wala pivot. ठीक है, तो अब यहाँ पर दो सिनेरियो है डायरेक्शनल पर्सपेक्टिव. ये एक गैप जोन है, इस गैप जोन से अगर मार्केट ने यू टर्न लिया कन्विंसिंगली तो हम लोग यहाँ पर एक लॉन्ग जाने का प्लान कर सकते हैं. दूसरा सिनेरियो ये है कि सपोज दिस लेवल ब्रेक्स, फिर हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इज द पिवट सपोर्ट एट 24,007 के आसपास. वहां पर अगर मार्केट आके एक रिवर्सल साइन देता है तो हम लोग वहां पर लॉन्ग प्लान कर सकते हैं. इज दिस क्लियर? ठीक है ना? Can we go wrong in both of this? Can the market continue to go down, or can the market, just shoot up from here? Anything can happen on the side of the chart. क्योंकि कल क्या होने वाला है, बड़े लोग, politicians, business people, what they are planning, you and I as retail traders will not be able to understand what is happening. ठीक है, हमको सिर्फ मालूम पड़ता है पोस्ट. So all we need to do is
सिनेरियोस, अगर ये हुआ तो ये करेंगे, अगर वो हुआ तो वो करेंगे। यहाँ तक क्लियर है एवरीबॉडी? डिलीट ऑल दिस। हाँ, एक थर्ड, ये हो गया डायरेक्शनल. We have two scenarios where we are looking to, trying to go long, because ultimately I don't want to propagate a lot of short selling, because market में पैसा तभी बनता है तो long हो. Short selling involves a lot of risk, futures में sell करना पड़ता है या options की कोई strategy बैठानी पड़ती है, और market is not designed to go down. It is designed to go up, and we'd rather make money. When the market goes up, we should be the economy itself. As a trader, understand emotions साइड में रखो, और शॉर्ट आता है तो शॉर्ट करो, लॉन्ग आता है तो लॉन्ग करो, वो सब बराबर है. Prima facie, I would want to make money on the long side of the market. Right? और वैसे यहाँ पर कोई शॉर्ट का ट्रेड तो नहीं दिख, राइट? यहाँ पर कोई भी ऐसा चार्ट पैटर्न नहीं है जिसमें शॉर्ट का ट्रेड दिख रहा है, बिकॉज अगेन सपोर्ट जोन, राइट? यहाँ तक क्लियर है? व्हाट इज द थर्ड काइंड ऑफ अ ट्रेड दैट वन कैन डू? कि भाई मार्केट जो है ना, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस, राइट? ये क्या हो गया? एज वी मेंशन्ड, एज वी अंडरस्टूड, दिस इज अ रेजिस्टेंस एरिया, and this can be classified as a support area. Yes or no? Now, if we are having a range, and what is the level of the range? Let's understand this range. ये करीब 800 points का range है. Yes or no? We have about a 800 point range within which the market is likely to move, because a clear breakout will not occur until and unless this particular range, the current range, right, is broken on either side. या तो 25,153 ऊपर की तरफ ब्रेक हो गए, 24,037 नीचे की तरफ ब्रेक हो गए. Until that happens, you will not be able to convincingly say that there is a breakout. Right? In the meantime, this is the identified range. Can we say what is? Can we understand what is the midpoint of this range? What have I done? I have basically divided this range into two parts. ठीक है ना? एक ऊपर का और एक नीचे का, और मिड लेवल देख रहा. मिड लेवल ऑन द स्पॉट चार्ट 4,745. Correct? Now, why is this important? Why have we done this? In the absence of any, can you say what is the current trend in the market? अगर मैं मार्केट के चार्ट को ऐसे दिखाऊं यहाँ से, can anybody tell me what is the trend in the market? यहाँ तक. Is there any clarity of the trend? Is there any clarity of the trend? There is no clarity in the current trend in the market. Yes or no? Market is typically in a sideways range. इसको हम लोग टेक्निकली भी कैसे देख सकते हैं? How can we confirm that the market is in a sideways range? We can use some of the technical indicators. A simple indicator would be a very popular one as a super trend. Okay? Super trend क्या बता रहा है? Comparing to super trend is flatlining. सुपर ट्रेंड जब मार्केट में ट्रेंड रहता है, इज एट एन एंगल, बट व्हेन इट फ्लैट लाइंस, जब 0 डिग्री हो जाता है ना सुपर ट्रेंड का, दैट विल टेल यू दैट द करंट ट्रेंड इज फ्लैट. वन वे ऑफ, एक डर्टी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ट्रेंड क्या है. दूसरा क्या हो सकता है भाई? हम अपने मूविंग एवरेजेस डाल लेते हैं. करेक्ट? वी कैन पुट आवर मूविंग एवरेजेस. लेट अस सी व्हाट आर द मूविंग एवरेजेस टेलिंग. Let me remove everything else. Are the moving averages fairly flat, or is it trending? Moving averages are also fairly flat. कोई major trend यहाँ पर दिखा रहा था ये गैप से, फिर यहाँ पर आने के बाद the trends have become flat. So moving averages are also flat, the trends are flat. So net, if you see this, you will feel that the market is not trending. एक और तरीका क्या होता है? Look at the RSI. Where is the RSI? RSI is also at 48, मतलब 50 फ्लैट लाइन है. RSI का एक बहुत अच्छा एक सिंपल एनालिसिस होता है, सिंपल तरीका होता है RSI को समझने का. ठीक है? Between 70 and 60 you are in an uptrend.
between 40 and 30, you are in a downtrend, right? Between 60 and 40 is sideways, right? Above 70, you are overbought. Below 30, you are oversold. एक thumb rule होता है, right? Lot of people, tend to shift the numbers a little. Shift the goalpost. या 60 नहीं, 55 होना चाहिए, 40 या 40. ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लो. मोटा मोटी ये सब तो अगर RSI का is the RSI range, that is strength index of the current trend, if it momentum is between 0 and 100, middle of that will be flat. Middle of that will be a sideways market on the higher side, right? The upper quartile will be your uptrend, नीचे के quartile से नीचे के 1/3 will be a downtrend, and if it goes below 30, you will call it as oversold, and above 40, above 70, you will call it as overbought. ठीक है? Right now the market is very clearly telling that there is no visible trend in the market. Is this clear? Okay. So what we have understood, that the market is not in a trend. Okay. This breakout was a fake out. It did not last long. However, we are currently in a support area. The market could possibly take a support from here and move up. Whether it will do that or not, we will wait for it to take a directional bet. But as options trader, derivatives trader, can we take advantage of this identified range and trend analysis? The trend analysis is the trend is slightly the product frame. Uh, Market is trading between a resistance point and a support point and is currently at the center area. Does this make sense? You are able to make sense, right? The market is in a 800 point range. Okay, identified very clear है ना, मतलब ये तो आंखों से दिखता है कि यहाँ पर resistance trend is sideways. Okay, we identified a couple of technical indicators, and the price is between the support and resistance and is currently near the midpoint of this range. So this is our current short-term analysis. Okay. What sort of trading strategies can you do? First question is, can you trade this market directionally? Can this market be traded directionally? The primary understanding, in my opinion, is while there is a case to be made out that there could be a support, but until and unless that happens in the next trading sessions, I feel the primary of analysis or the primary inference would be the market ना directionally trade करना difficult है, क्योंकि breakout आता है, breakout आता है. अभी नीचे जा रहा है, अभी मैं short जाऊंगा, support area, शायद यहाँ से वापस रिवर्सल में. तो मार्केट ये भी कर सकता है ना, यहाँ पे सपोर्ट ले गए, बट ऐसे ही साइडवेज भी जा सकते हैं. दिस इज द थर्ड सिनेरियो. While it takes a support, it does not form a clear trend. Why? Because there is a lot of moving factors. ट्रम्प टैरिफ्स के बारे में क्लैरिटी नहीं है. हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स ठीक ठाक है, आगे की विजिबिलिटी थोड़ी क्लैरिटी आ जाने दीजिए. जीएसटी के ऊपर कुछ काम चल रहा है. हाउ विल दैट इम्पैक्ट? बिकॉज देयर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. जीएसटी जब नेशनलाइजेशन के लिए अनाउंसमेंट आया, द फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन वाज, या कि यार बहुत अच्छा है, जीएसटी कम कर देंगे, ये करना था.
But when you did a deeper analysis, you found out a couple of things. Because the GST rationalization is going to happen by around next quarter, which is around Diwali, तो लोगों का जो एक्सपेंसेस था, जो लोगों ने एसेट खरीदने की बात कर रहे थे, जैसे somebody wanted to purchase a car, somebody wanted to purchase a white good, right, like an AC or a television or something, इसमें 28% से 12% आने की बात होती है, तो ऑब्वियस चीज क्या होगा, आई विल पोस्टपोन माय कंजम्पशन। तो ये जो सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट है ऑफ द कंजम्पशन इम्पैक्ट, ये भी खराब हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपनी परचेजेस पोस्टपोन कर दी। मुझे मालूम है कि दिवाली पे ऑफर भी आता है, जीएसटी भी रहेगा, तो यार 2-3 महीना, 2 महीने की बात है, रुक जाते हैं। करेक्ट। मैं गाड़ी अभी गणपति पे नहीं खरीद के मैं सामने दशहरा पे खरीद लूंगा, दिवाली पे खरीद लूंगा, तो इस तरह से पोस्टपोन हो गया काफी कंजम्पशन, विच इज व्हाई मार्केट्स जो अप ट्रेंड है, जीएसटी का न्यूज है, may not be all that great for this sector, इसके कारण ये शायद फेड आउट हो सकता है, राइट। सेकंड सिनेरियो इज, भाई मार्केट में कोई क्लैरिटी नहीं है टैक्स की, मार्केट में कोई क्लैरिटी नहीं है ये जीएसटी का इम्पैक्ट क्या होगा, के कारण मार्केट साइडवेज भी होने की संभावना है। सो देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज दैट वन हैज टू वर्क। देखो वन कि यहाँ पे आएगा तो मार्केट ऊपर ही गिरेगा, यहाँ पे आएगा तो मार्केट नीचे ही जाएगा। टू ऑफ अनकंफर्टेबल मूविंग वेरिएबल्स, कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता है, ये ऐसा वेव्स की तरह रहता है, सब पॉजिटिव सब नेगेटिव, मल्टीपल न्यूज आएंगे, मल्टीपल न्यूज फ्लो आएगा, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अंडरस्टैंड कि यार इसका इम्पैक्ट क्या होता है and take a judgment. So nobody is always right or wrong. It's your analysis, it's your scenarios. Which scenario plays out? That's important question. Is this clear, everybody? यहाँ तक क्लियर है सभी लोग? तो ये थर्ड जो है जहां पर ट्रेंड साइडवेज दिख रहा है, प्राइस इज बिटवीन अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड नियर द मिड पॉइंट, हम डायरेक्शनली ट्रेड नहीं कर सकते, नॉन डायरेक्शनली ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडर्स non-directionally. Yes or no? If I want to trade this in a non-directional fashion, what is the instrument that we will use? Options. You understand the logical flow that we have till now followed through? कि भाई मार्केट का एनालिसिस क्या, ब्रॉड मार्केट क्या बोल रहा है, ठीक है, एंड हम लोग डायरेक्शनली ट्रेड कर सकते हैं, वी हैव डन सम सिनेरियो नाउ, बिकॉज दिस इज आवर करंट व्यू इन्फरेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई ये अगर मार्केट साइडवेज ही रहा तो उसका एक सिनेरियो क्या है, उसका सिनेरियो क्या कहता है, वी ट्रेड नॉन डायरेक्शन एंड वी ट्रेड दिस वाया ऑप्शन। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस सेशन, लाइव सेशन, ठीक है, मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कई लोग हैं, कुछ लोगों को लगेगा बुलिश है, कुछ लोगों को लगेगा बेरिश है फ्रॉम दिस लेवल, एंड कुछ लोग अग्री करेंगे ये थर्ड सिनेरियो। अप टू यू, मतलब आपका जो व्यू बनता है आप उसके हिसाब से ट्रेड करोगे। हम लोग ने आपको यहाँ पे क्या ट्राई किया है, वी ट्राई टू फॉलो अ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जो हमको देखना चाहिए, उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन पे कैसे अराइव करते हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू, इज दिस क्लियर? ऑप्शंस में नॉन डायरेक्शनल सेटअप हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रेड द वीकली ऑप्शंस, वी कैन ट्रेड द मंथली ऑप्शंस, ठीक है। नाउ अगर नॉन डायरेक्शनल सेटअप्स कौन से होते हैं, चलो नॉन डायरेक्शनल सेटअप्स हियर, सबसे सेफेस्ट वुड बी एन कॉन्डोर, ठीक है, और स्ट्रैंगलर। अब आयरन कॉन्डोर इज अ डिफाइंड रिस्क स्ट्रेटेजी, strangles are an undefined risk strategy because they are undefined, beginners के लिए ये suitable नहीं है। If somebody who is having a lot of understanding about the technical aspect of the market and is now venturing into derivative trading, the first and foremost setup that one should look at with a non-directional scenario is your iron contours, ठीक है, iron condor भी कर सकते हो और you can even do iron
butterfly, not a short straddle. स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल आपको एज बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसका रिस्क मैनेजमेंट, उसका साइकोलॉजी, उसका बिहेवियर अलग होता है फ्रॉम अ नॉर्मल फाइनेंस रिस्क। तो आपको या तो आयन कॉन्डर करें या तो आयन बटरफ्लाई साइकिल्स। दीज आर द टू स्ट्रेटजीज फॉर एनी बिगिनर और एनीबडी हु वांट्स टू डू अ पीसफुल सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड बाय डूइंग a risk defined strategy. Okay. So we have understood multiple scenarios. No? Is this clear, everybody? Okay, move on. If there are no questions, I and look at Bank Nifty also, because broadly हम लोग दो indices देखते हैं. Now Bank Nifty में अगर आप देखते हैं, let me add one more line here. Coordinates 54, 53,000. Second. हाँ. Now these are your key levels. मैं बस ऐसे मार्क करके रखता हूँ to understand where are the key levels on the price chart. ठीक है. We are below 55,000. यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा डिफरेंस क्या है? निफ्टी का जो ये थोड़ा सपोर्ट था ये अभी भी बरकरार है, द नियर टर्म सपोर्ट। बैंक निफ्टी में एक गैप जो था वो भी तोड़ दिया है एंड उसके नीचे अभी ट्रेंड है। तो इन बैंक निफ्टी what do we notice? We notice low. Let's zoom out the chart अच्छे से बता पाऊँ। Alright. What do we notice on बैंक निफ्टी? हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं, we have a low, we have a lower low, बराबर, and we have a price point था, and we have made a lower high. What is the inference of this? What is the trend? आपके हिसाब से यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस क्या बोलता है? The trend is when did this become down? Broke this low today, right? So the trend has turned down, okay, by creating a lower low. So the first difference in Bank Nifty would be Bank Nifty is now turned bearish. Are we clear? Till market reverses and crosses this point, which is 55,000, will not convince you that the market trend has changed. Right now, the trend is negative or for the worst come down. तो मेरा पहला इंफरेंस ये है कि यार बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो खराब हो रखा है, एज कंपेयर टू, ठीक है ना? आपको दिख रहा है ये जो रिसेंट, मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, दो चार्ट बना के लिया निफ्टी एंड ओके, फ्यूचर्स कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम बैंक निफ्टी। ओके, नाउ दीज आर द डेली चार्ट्स दोनों के। ओके, दोनों एक ही हो गए क्या? सिंबल सिंपल है। नाउ दीज आर द डेली चार्ट्स ऑफ बोथ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन कर लेता हूँ। राइट, नाउ इफ यू नोटिस बैंक निफ्टी इज वीकर ऑफ द टू। आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने
पिवट जो अगस्त फर्स्ट वीक में बनाया था, अगस्त फर्स्ट वीक में जो पिवट बनाया था, बैंक निफ्टी हैज ब्रोकन थ्रू दैट पिवट, राइट? निफ्टी इज स्टिल मेंटेनिंग high distance from that pivot. It is in the middle of it. Nifty is not as comparatively weaker as compared to Bank Nifty, right? ये एक visual confirmation आता है कि which is the weaker. Bank Nifty as a sector, as a index, is definitely weaker from the. Now, when Bank Nifty is showing this weakness, right? What should be our primary analysis? Is this the start of a trend? आपके कितना oversold territory? सबको समझ में आता है कि अगर weak है तो short मारो, ठीक है? That's the first impression. आप हमेशा ये देखो कि यार अभी एट अ सपोर्ट जोन, this price already down by a lot. Are we at already sold levels, or do we think that there is some more room to go on the downside? तो ये टेक्निकली कैसे देख सकते हैं? क्या हम लोग कोई सपोर्ट एरिया पे हैं? सपोर्ट एरिया फॉर मी, यू आस्क, दूर दूर तक कोई अच्छा सपोर्ट एरिया नहीं दिख रहा। मे बी करंट लेवल 54,500 शायद कोई सपोर्ट हो सकता है, बट इफ यू आस्क मी 54 एंड 53,600 के आसपास यहाँ पर कहीं है जो ये एक लेवल यहाँ पर हम लोग ने मार्क किया। दिस इज क्लियर? दिस कुड पॉसिबली बी अ एरिया ऑफ सपोर्ट। बैंक निफ्टी में थोड़ा वीकनेस लग रहा है, यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? देवेंद्र, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था सर, यहाँ पे कोई भी ट्रेड कह देते हैं कि आप कॉल लो पुट लो, ये सब नहीं बता सकते सर। आप सिर्फ मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप कोई भी ब्रोकर के साथ साइन करिए, वहां से आपको रिकमेंडेशंस दिया जाएगा। This is not the place where we are going to be giving you trade recommendations. We are simply telling you how to, showing you how to do market analysis and what sort of structures we get. Now, the second thing that we need to do is understand whether this is oversold or there is still some more room to go. So what we can do, we can use a couple of technical analysis indicators, same indicators use करते हैं। चलिए हम लोग ने सुपर ट्रेंड यूज किया था। निफ्टी में सुपर ट्रेंड कैसा था? फ्लैट लाइन। बैंक निफ्टी में सुपर ट्रेंड का अभी करेक्ट क्या है? करंट स्लोप क्या है? करेक्ट सुपर ट्रेंड इन बैंक निफ्टी, इज इट फ्लैट और इज इट अ स्लोप? What do you think it is? It is very clearly in a downward slope, yes or no? So by this indicate, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर रहा हूँ। ये वाला इंडिकेटर फ्लैट था, ये इंडिकेटर का स्लोप नीचे की तरफ। This itself should tell you or give you the inference now the market in the last 3 days or bank nifty while it was flat last 3 days के correction में यहाँ तक क्लियर है? और यू विल रीड द मार्केट, किसी पर भरोसा नहीं करें, किसी के ऊपर आप निर्धारित ना हो, आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। एक इंडिकेटर ये हम लोगों ने लगा के देख लिया। अब ठीक है, मार्केट बता रहा है या टेक्निकली बता रहा है कि द स्ट्रक्चर इन बैंक निफ्टी इज वीक। नाउ द ऑब्वियस क्वेश्चन इज सर क्या शॉर्ट शॉर्ट चले जाएंगे? उसके लिए हमको क्या देखना चाहिए? आर वी इन टेरिटरी या इज देयर अ चांस दैट वी आर नियर सपोर्ट एरिया? कोई डिमांड जोन कोई सपोर्ट एरिया में है? बैंक निफ्टी का चार्ट कोई भी इस तरह का सपोर्ट एरिया ऑन द प्राइस एक्शन फ्रंट नहीं दिखता। नियरेस्ट टू सपोर्ट looks to be around 53,600, 54 53,000 के आसपास का एक सपोर्ट एरिया शायद नजर आ रहा है। मैं 54,000 क्यों बोल रहा हूँ कि एक प्रायर फ्लिप जोन था, इसके ये एक सपोर्ट एरिया आपका बन जाए। यस और नो? थोड़ा चार्ट में आपको, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर भी एक आपका फ्लिप जोन था, राइट? नाउ तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि
मार्केट करंटली एक फ्लिप जोन था, जो पहले एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया है. वी आर करंटली एट दैट पॉइंट. तो देयर कुड बी अ चांस कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले एंड इट विल टू, if this area breaks, then the next thing, which is 50 के आसपास आना, 3000. आपको लेवल्स ट्रेड करने हैं, करेक्ट. आप एक एक लेवल देखेंगे तो ये आप these three levels बैंक निफ्टी which can act as support areas. We are currently at a पुराना सपोर्ट एरिया है, तो होल्ड करेगा नहीं करेगा, यू योरसेल्फ कैन इन्फर, यार इतना पुराना है, शायद होल्ड करे शायद नहीं. समथिंग व्हिच इज मोर फ्रेश और रिसेंट कैन हैव अ लिटिल. ठीक है. यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे था, वो टूटा, ये वाला भी टूटा आज, तो थोड़ा मार्केट वीकनेस तो डेफिनेटली नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में. Now, when there is weakness in bank nifty on multiple time frames or multiple fronts, you will also check कि यार ये मार्केट है ऑलरेडी ओवरसोल्ड. के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ, व्हाट इज इट, आर एट 32. हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या सोचा था, क्या समझा था कि बिटवीन 40 एंड 50 मार्केट इज बेरिश, प्राइस एक्शन इज बेरिश. ठीक है. वी आर नॉट नियर एनी सपोर्ट एरिया, तो 54,000 तक शायद एक नया सपोर्ट बने. अगर ये वाला जो एक छोटा मोटा बहुत पुराना सपोर्ट जोन वी कैन पॉसिबली गो डाउन बाय अंदर 6 पॉइंट्स, ऐसा लग रहा है ऑन द प्राइस चार्ट. ठीक है. व्हाई, बिकॉज ओवरसोल्ड नहीं है. जब भी मार्केट ओवरसोल्ड होता है एंड हम लोग सपोर्ट एरिया में रखते हैं, तो हमारे लिए अच्छा मौका होता है फॉर अ रिवर्सल सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड. अब यहाँ पे सिनेरियो क्या हो सकता है इन बैंक निफ्टी. ओके, नो ट्रेड रिकमेंडेशंस और एनीथिंग, ऑल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज प्राइस एक्शन और इसमें किस तरह का एक व्यू बन सकता है. मार्केट आया, मार्केट एक बहुत पुराने सपोर्ट पिवट पे है, शायद इसका कोई ज्यादा अर्थ ना हो. आई मीन आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, बट शायद ना हो, एंड इट विल प्रोबेबली कम इन दिस एरिया. एक ये सपोर्ट एरिया माना जा सकता है. नो, से 54 से लेके 53 500, मोटा मोटी राउंड फिगर बात करते हैं, इजी टू रिमेंबर. इफ द मार्केट इज लाइकली टू कम टिल हियर, given our price analysis, understand, what do you think will happen to the RSI when market comes? Let me put it this way, if and when BN comes to our identified support area, RSI will be what? What do you think RSI will be? Which is currently at 82. जब यहाँ पर अगर और नीचे गिरेगा तो RSI आपको उस टाइम क्या हो जाएगा? Is there a possibility that RSI will be below or equal to 30? There is a very strong possibility क्योंकि we are already at 32.5. अगर यहाँ से यहाँ तक आता है, there is a chance कि RSI और weak, market bearish. And if it comes to 30 or hovers around 30, he will be near oversold territory. Is the analysis clear? If the market falls to this support area, but if and when the market falls to the support area, RSI, which is currently at 32.6, there is a very strong likelihood that because of this weakness, RSI can come close to 30 or possibly below that. If that happens, what is the kind of chart structure that you have? PN at support, this one, right? Plus RSI over sold.
Yes or no? Which is, let's say, below or equal to 30. If these two things happen simultaneously, is there a chance of a counter trend trade? When would you do these counter trend trades? When you have confluencing factors at higher time frame support areas or at higher time frame resistance. Oversold at these areas, short करने का देखो. Overbought at resistance areas आप short करने का देखो. Oversold at support areas आप buy करने का देखो. यहाँ तक एनालिसिस क्लियर है सबको? Yes or no? It is clear till here? Now, directly जब market support में आता है, should you go and take a trade? No, you will always wait for confirmation. है ना? Confirmation क्या हो गया? बाजार ऐसे अंदर आया, right? In this area, collected some orders and then starts to move up. जब ये U turn दिखेगा, pivot दिखेगा, pivot, U turn. What are these? These are confirmation signs. When this happens, you will get two things. What? Number one, confirmation of reversal. Second, you will have a clear stop loss. Because whenever the pivot happens, तो यहाँ पर एक pivot था. Suppose you wanted to go long here. ठीक है, आपने जो भी एनालिसिस किया, आपने यहाँ पर बाजार आएगा तो मैं लॉन्ग जाऊँ. हाइपोथेटिकल. अब क्या करोगे? ये कंफर्मेशन क्या कराया? आप इधर ये क्लियर कट स्टॉप लॉस आ जाता है. बिकॉज वो पिवट है, उसके बेसिस पे आपने ट्रेड लिया. अगर वो पिवट ब्रेक होता है, जैसे अभी यहाँ पर ब्रेक हुआ है, तो स्टॉप लॉस सेट कर दिया. या तो आप अपने टारगेट पे काम, भाई 1:1 का टारगेट लेते हो, आप निकल गए. इन आइदर सिनेरियो यू विल हैव अ क्लियर कट टारगेट कि आपको कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस करना है, क्या टारगेट रखना है. क्लियर एवरीबॉडी? एक सिंपल एनालिसिस है. हर प्राइस पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते. हर लेवल ट्रेडेबल लेवल होता है. बैंक निफ्टी में वीकनेस है, में भी वीकनेस है. निफ्टी इज इन अ रेंज. बैंक निफ्टी हैज ब्रोकन द डाउनसाइड ऑफ द रेंज and is likely to head lower. Nifty is in that particular range. It is in that gap zone, but उसका जब तक कोई confirmation नहीं आता on either side, we are not taking any bets. Now, because Nifty is in a range and we are close to the midpoint of that range, and Nifty has weekly expiries at least till now, you can always plan out a non-directional setup. Those scenarios, right? उसमें iron condor and iron butterfly are the selected ones. Whereas in Bank Nifty, the trend is clearly, it has broken through a pivot, it has formed a lower low, so the trend has turned weak. Okay, that gap up has been created and convincingly created. तो वो तो जो gap up इधर हुआ था, ये GST का movement, this is completely got faded. It was not picked out, and market has continued with its prior downtrend. So Bank Nifty is weaker of the two. इसमें क्या हम करें? कोई ट्रेड कर सकते हैं. There is a possibility that you can ride the market a little down. ठीक है, you can plan out some short trades, given options, given futures. इस तरह से क्या plan कर सकते हैं. And the support area looks to be around over 50,600 के आसपास, given that pivot. वहां पर अगर आता है RSI अगर दिखाता है कि भाई oversold है, there is a confirmation, you can look to trade long trades over there. तो ये broad market analysis है. Yes. So this is our entire section for today. Broad market analysis only. We spent a little in-depth, discussion how to do basic price action trading. Last time we had also discussed about various different strategies that we can do. I'll just give you a quick
glimpse of that. Anybody who has joined new or has not in the last session, मैं आपको एक क्विक स्नैपशॉट दे देता हूँ यहाँ पर कि हम लोगों ने क्या किया था. Yeah. So this is the entirety that we had discussed in the last session. We discussed about some basic trading building blocks, directional views, किस तरह से trade कर सकते हो, instruments to trade, what are the types of directional view, bullish, bearish, cyclic, and bi-directional. Bi-directional basically from a range it can give a breakout either direction. A very strong volatile move can be expected just before an event, like like monetary policy, like your elections day. Yeah, single specific stocks की बात करें तो on announcement of results. ठीक है, बाई डायरेक्शन नोन इवेंट्स में ही आप बाई डायरेक्शन प्लान कर सकते हैं. बराबर, अननोन इवेंट कुछ बहुत छिड़ जाते हैं या कोई आ जाती है, दैट इज नोन इवेंट, प्लान अ बाई डायरेक्शन ट्रेड देयर. सेकंड, व्हेन डू यू बाय ऑप्शंस और सेल ऑप्शंस? व्हेन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में बात किया था. IV इज लो, you look to buy. IV is high, you look to sell. एडवांस ट्रेडर्स और एक लेवल बताया था यहाँ पर. एक IV करंट लेवल जो है उसके बेसिस पे advanced traders also predict the IV or try and develop models to forecast. ठीक है, which is where they expect IV low है but it can continue to remain low. It can, you know, उसके basis पे बोलो predict करना. So we are not looking at the advanced nature of options for the time being. इसको मैं for our understanding कर देता हूँ. ठीक है, so we can for the time being ignore. Then there are some tips or some suggestions options traders given our experience. When you buy options, you want big movement down the line, and वो बहुत जल्दी आना चाहिए ताकि आपको थीटा डिग्री से बचे. जब आप ऑप्शंस बाय करते हो एंड आप समझो मंथली या 3 महीने के ऑप्शंस भी ट्रेड कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल इंडेक्स और इवन इन स्टॉक, रुपी स्टॉप लॉस. साइडवेज मार्केट में भी आपको ऑप्शन बाइंग में लॉस होता है ऑन अकाउंट ऑफ थीटा. सो आपका लॉस दो तरीके से हो सकता है, या तो प्राइस आपके स्टॉप लॉस को हिट करे इन योर बाइंग ऑप्शंस, और या तो थीटा डिके के कारण भी मार्केट साइडवेज होने देता है, आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया, टारगेट भी हिट नहीं किया, एंट्री के आसपास रहा तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा बिकॉज़ ऑफ थीटा. तो ये कीप अ रुपी स्टॉप लॉस. ठीक, आपको रुपी स्टॉप लॉस सपोज आपने 10,000 का खरीदा तो मैक्सिमम लॉस आपका 10,000 है. बट आप सोचो, आप बोलोगे कि नहीं मेरे को 5,000 का ही रिस्क लेना है इस ट्रेड, तो 5,000 का अलर्ट मार, यदि भी मेरा मार्क टू मार्केट 5,000 रुपया हो. इट कुड बी बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, या इट कुड बी बिकॉज ऑफ नॉन सेक्शनल या थीटा डिके के कारण मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आया, उसके कारण भी हो सकता है, तो भी मैं निकल जाऊँ. देयर आर दीस टू ऑप्शन. ये ऑप्शन है लास्ट का. हाँ, ऑप्शन सेलर्स के लिए रुपी स्टॉप लॉस उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना आईवी का व्यू. इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आगे बढ़ के और डिक्रीज इज अ वेरी क्रिटिकल व्यू. एंड ऑप्शन सेलिंग में आप स्पेशली नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स कर रहे हो, आपका पोजीशन साइज काफी काफी critical होता है, स्पेशली फॉर एडवांस ट्रेडर्स हु आर ट्रेडर्स ऑफ स्ट्रेंथ. उनके लिए पोजीशन साइजिंग बहुत important है, क्योंकि आप लीवरेज लेके बड़ा काम का मार्क मार्केट भी काफी बड़ा हो सकता है, और आप सेलिंग में आपको थोड़ा और ध्यान देना पड़ सकता है. ठीक है, एंड ये कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज थी कि भाई एक ग्रिड बनाया, ऑप्शन के आईवीज क्या है, आपका डायरेक्शनल व्यू क्या है, उसकी बेसिस पे सिंपल स्ट्रेटजी, सिंपल बेरिश स्ट्रेटजीज बाय डायरेक्शनल, ये कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है. मे बी इन द सेशंस वी कैन पिक one strategy and have a in-depth 15-minute discussion ये स्ट्रेटजीज के बारे में, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, क्या लेवल्स होते हैं, कौन से स्ट्राइक्स लेनी चाहिए, टेम्पलेट हम लोग बना के देख सकते हैं. That we will do it in the future. Okay? Future sessions when there will be. I hope everybody is clear with this. Let me thank all of you for being a part of this session. I hope everybody has enjoyed listening to this session, and आगे चल के we will try and keep it on a regular basis. And you know, I'll be happy to take your questions and all that. And trade smart, trade small, keep your stop losses in place. As a trader, you don't want to have unlimited
stop loss. There are a lot of courses on Uplearn, the sister concern of Upstox, into education of the financial markets. Check that website out, and you will find a lot of courses over there, and there you can see what risks, there's options, fundamental analysis, technical analysis, and then sign up for those courses and learn. Right. Thank you so much. I'll take your leave now, and I wish you all the very best. Very happy Ganesh Chaturthi in advance to you and your families.